गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। पॉलिटिकल टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया है, जबकि कुछ और पार्टीज़ जो है उनका नेशनल पार्टी का स्टेटस रिवोक कर लिया गया है। तो जो ये स्टेटस है नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ टेक्निकल क्राइटेरिया बताया है और उसके बेसिस पर ये जो है स्टेटस दिया जाता है। तो अगर हम नेशनल पार्टी देखें तो एक पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस कब मिलता है, या वो जब वो चार या चार से ज़्यादा स्टेट्स में उनके पास स्टेट पार्टी का जो है स्टेटस आ जाए, या फिर उनको 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिले किसी भी चार या फिर ज़्यादा स्टेट्स में इन द लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस, या फिर वो 2% ऑफ टोटल सीट्स लोकसभा में जीते कम से कम 3 स्टेट्स में। ठीक है। अब स्टेट पार्टी का स्टेटस कैसे मिलता है? स्टेट पार्टी का स्टेटस के लिए भी ऐसा ही एक क्राइटेरिया मेंशन किया गया, या तो उनके पास 6% वोट शेयर हो पिछले लास्ट असेंबली इलेक्शन का, और उनके पास दो कम से कम एमएलए हो, 6% वोट शेयर हो लास्ट लोकसभा इलेक्शंस का उस पर्टिकुलर स्टेट से, और कम से कम एक एमपी उस स्टेट से उनकी पार्टी से जीता हो, या फिर 3% उनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आएँ, या फिर मिनिमम 3 सीट्स आएँ, जो भी सबसे जो है मोर है वो सबसे वो अगर उन्होंने जीती हो तो भी उनको स्टेट पार्टी का स्टेटस मिलता है, या फिर एक एमपी उनका हर 25 मेंबर मतलब 1:25 की रेशियो के हिसाब से, फ्रैक्शन के हिसाब से उनके लोकसभा में जो है वो एमपी हों, या फिर 8% उनको टोटल वैलिड वोट्स मिले हों लास्ट असेंबली इलेक्शन में, या फिर लास्ट लोकसभा इलेक्शन में उस पर्टिकुलर स्टेट से, तब उनको स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। ठीक है। अब इस रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ को जो है ये स्टेटस का वैल्यू क्यों होती है, क्यों इनको ज़रूरत होती है स्टेटस की? तो स्टेट पार्टी जब अब कोई बनती है तो उसके लिए एक उस स्टेट में सिंबल अलॉट कर दिया जाता है, जो कि कोई और रिजर्व सिंबल को यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा ही नेशनल पार्टी के स्टेटस में पूरी कंट्री वाइड उनको एक सिंबल दे दिया जाता है, जिसको कोई और पार्टी या कोई कैंडिडेट यूज़ नहीं कर सकता। स्टेट पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़ जो है उनको सिर्फ एक ही प्रपोजल की ज़रूरत होती है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। ऐसे ही 2 इलेक्टोरल रोल्स जो है वो पार्टी को जो है वो फ्री मिलते हैं, और एक इलेक्टोरल रोल जो है वो कैंडिडेट्स को मिलते हैं उस पर्टिकुलर पार्टी के ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस। टीवी ब्रॉडकास्ट पे, आकाशवाणी, दूरदर्शन पे उनको जो है वो टाइम स्लॉट दिया जाता है जनरल इलेक्शंस के टाइम पर, और उनको उनके जो 40 स्टार कैंपेनर्स हैं वो अलाउ किए जाते हैं, जिनका जो है ट्रैवल एक्सपेंसेस इलेक्शन एक्सपेंसेस में काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। गवर्नेंस, सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने रिसेंटली अभी चाइना बॉर्डर में किबिथू विलेज के पास अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें जो है 19 डिस्ट्रिक्ट्स, 46 बॉर्डर ब्लॉक्स ऑफ 4 स्टेट्स एंड यूटीज़ जो है उनमें एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करने का जो है वो के लिए फंड्स दिए जाएंगे। अब ये कौन सी जगहों पर जो है इम्प्लीमेंट होगी स्कीम? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूटी ऑफ लद्दाख में। ठीक है। मोटिव ये है कि आउट माइग्रेशन जो है इन विलेजेस से उसको रोकना है। क्या प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे? रोड कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर विंड एनर्जी, ये सारे प्रोजेक्ट, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर पहुँचाई जाएंगी, ताकि लोग वहाँ से भागे नहीं, माइग्रेशन ना हो वहाँ से। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ग्राम पंचायत के थ्रू जो है वो इस सेंट्रल और स्टेट की स्कीम्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और याद रखो, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम तो अलग है, वो अपना चलता रहेगा। इसके साथ जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी पैरेलल चलाया जाएगा, कोई ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट जो हैं सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक एफिशिएंट सर्स सबस्ट्रेट, सर्स क्या है? सब सरफेस एनहेंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसका एक सबस्ट्रेट जो है वो डिज़ाइन किया है। ये बहुत ही लो कॉस्ट सबस्ट्रेट है और ये सेंसिटिविटी बढ़ाएगा सर्स की। ठीक है। तो अब ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? सीवी रमन जी ने 1928 में इसको जो है वो डिस्कवर किया था कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशनल, रोटेशनल और लो फ्रीक्वेंसी जो मोड्स है मॉलिक्यूल्स के, उनको डिस्कवर किया था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके पीछे क्या प्रिंसिपल काम कर रहा है कि जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है उसका इस्तेमाल करते हुए उसको जब हम पास करेंगे किसी सैंपल से, तो उससे जो रेडिएशन है
वो डिफ्लेक्ट होगी या फिर रिफ्लेक्ट होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी या स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो है वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो अब आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स साइंस के आपको सिर्फ बेसिक्स ही पता होने चाहिए। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट भी क्या होता है कि एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिव करेगा, या जो सब्सटेंस जो है उसके ऊपर जो है या फिर एंजाइम जो है वो उस सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करेगा, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूरेनियम 241, ये भी आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो फिजिसिस्ट हैं जापान के, उन्होंने जो है यूरेनियम 241 जो कि यूरेनियम का एक आइसोटोप है उसको डिस्कवर किया है, और उसका एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 241 है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इसकी जो लाइफ है वो सिर्फ जो इसकी हाफ लाइफ है वो सिर्फ 40 मिनट्स है, मतलब फुल लाइफ इसकी 80 मिनट्स के आसपास हुई, ठीक है। यूरेनियम 241 जो है उसका मल्टी न्यूक्लियॉन ट्रांसफ़र एक प्रोसीजर के थ्रू, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके थ्रू जो है वो इसको जो है वो फाउंड किया गया है। अब यूरेनियम के बारे में देखते हैं हम। 1789 में मार्टिन क्लैपरॉथ जो एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सिल्वरी वाइट मेटालिक केमिकल एलिमेंट है, इसका हाईएस्ट एटॉमिक वेट होता है। नेचुरली ये जो है आपके सॉइल, रॉक और वाटर में लो कंसनट्रेशन में मिलता है, और इसको ओपन पिट और अंडरग्राउंड एक्सकेवेशंस के थ्रू जो है वो माइन किया जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। यूएन डेमोक्रेसी फंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो फोर्थ हाईएस्ट डोनर रहा है यूएन डेमोक्रेसी फंड का, ऐसा भी न्यूज़ रिपोर्ट में आया है। अब वही फंड है ये जिससे कि जॉर्ज सोरोस हैं, उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लगभग 68 प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड वाइड फाइनेंस किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यूएन डेमोक्रेसी फंड है क्या। फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल कॉफ़ी एनन जो है 2005 में उन्होंने इस फंड को बनाया, सिविल सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को जो है प्रमोट करने के लिए। इसकी फंडिंग जो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से होती है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करती हैं, उसके बेसिस पर ही फंडिंग की जाती है। एडवाइजरी बोर्ड में इसमें यूएन मेंबर स्टेट्स होती हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और पर्सनल कैपेसिटी में भी कुछ इंडिविजुअल सर्व कर रहे हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस, ठीक है। तो ये जो यूएन डेमोक्रेसी फंड जो है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसको सेक्रेटरी जनरल ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। 8 लार्जेस्ट मेंबर स्टेट कंट्रीब्यूटर्स हैं इसमें, और जो जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। 6 अदर स्टेट्स भी जो हैं वो जोग्राफिकली इसमें रिप्रेजेंट हो रही हैं। इंडिया जो है इस बोर्ड का मेंबर शुरू से रहा है, क्योंकि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट जो है वो इसका फंडर है, ठीक है। अब इसमें जो है प्रपोजल्स जो है एनजीओज रखते हैं, और उनके बेसिस पर जो है प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाता है। इंडिया जो है 2005, 2006, 8, 9, 11 में जो है $5 मिलियन तक जो है वो इसकी फंडिंग देता रहा है। लेकिन 2012 के आसपास जो है इसकी फंडिंग जो है वो डिप हुई, और उसके बाद 2017 में तो इंडिया ने इसकी फंडिंग बंद ही कर दी। अभी रिसेंटली बहुत ही नॉमिनल अमाउंट की फंडिंग जो है $1 लाख के आसपास की जो है वो, या $1.5 लाख के आसपास की फंडिंग इस यूएन डेमोक्रेसी फंड को, नॉमिनल फंडिंग जो है वो इंडिया ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। सो ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है CR राव जी, उनको इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स मिला है 2023 का। हर 2 साल में ये प्राइज़ दिया जाता है। 5 लीडिंग इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं, और उसके बेसिस पर ये प्राइज़ को जो है वो अनाउंस किया जाता है। तो इस प्राइज़ को जो है इंडिविजुअल को या फिर टीम को जिसने स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में काम किया है उसको दिया जा सकता है। तो CR राव जी कौन है? प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, स्टैटिशियन है। इन्होंने 3 जो है फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। पहला है क्रेमर राव लोअर बाउंड, दूसरा है राव ब्लैकवेल, तीसरा है आपका इंफॉर्मेशन ज्योमेट्री। अब तीनों की क्या एप्लीकेशंस हैं। जो पहला क्रेमर राव है उसका सिग्नल प्रोसेसिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी, रडार सिस्टम्स, मल्टीपल इमेज रेडियोग्राफी, रिस्क एनालिसिस, इन सब में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही राव ब्लैकवेल प्रोसेस जो है उसका स्टीरियोलॉजी, पार्टिकल फिल्टरिंग, कंप्यूटेशनल इकोनॉमेट्रिक्स, इन सब में जो है वो अप्लाई किया जाता है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन ज्योमेट्री जो है वो आपके हिग्स बोसोन मेजरमेंट्स में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एल नीनो। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीटरोलॉजिस्ट जो है उन्होंने फोरकास्ट किया है कि इस बार 50% चांस है कि एल नीनो 2023 में डेवलप हो जाएगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होते हैं। हमने कई बार इस टॉपिक को डिस्कस किया है इन्वायरमेंट के लिए। तो पहले तो हम देखते हैं नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं। तो आपको पता है कि जो भी आपका वेदर है वो ओशन टेम्परेचर पे बहुत डिपेंडेंट होता है। तो अगर हम पैसिफिक ओशन में देखें
सन जो है वहाँ के वाटर को, खासकर जो इक्वेटर के पास है, जो पैसिफिक ओशन, उसको बहुत वार्म कर देता है। तो जब वार्म हो जाता है तो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है नदर्न ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पार्ट पे, और हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है कोस्ट ऑफ पेरू पे। ये आपकी नॉर्मल कंडीशंस हैं। तो होगा क्या कि जो हाई प्रेशर सिस्टम है उसकी तरफ से जो है विंड्स जो लो प्रेशर सिस्टम की तरफ को चलेंगी, मतलब पेरू की तरफ से विंड्स जो है वो चलती हुई ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की तरफ आती हैं, और ऐसे ही मानसून को भी पुश मिलता है इंडिया की तरफ को। ठीक है, तो ये ट्रेड विंड्स जो है वो बेसिकली ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस में। लेकिन एलनीनो और लानीना के केस में थोड़ा सा चेंज आता है। एलनीनो को आप समझ लो कि यही कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं। हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ, लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है पेरू की तरफ, मतलब ठंडा पानी ऑस्ट्रेलिया की साइड में आ गया है, पेरू की तरफ जो है वो वार्म वाटर आ गया है, तो उसकी वजह से प्रेशर सिस्टम उल्टा हो गया है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मानसून हमारा इफेक्ट हो जाएगा उसकी वजह से। लेकिन ला नीना में क्या होता है, ला नीना में जो ये नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये बहुत ही एक्सट्रीम पहुँच जाती हैं, मतलब हमारे यहाँ पर एक्सट्रीम रेनफॉल होगी फिर। ठीक है, क्योंकि पेरू में जो है वो बहुत ही गर्म पानी हो गया, बहुत ठंडा पानी हो गया, हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। लो प्रेशर जो है नदर्न ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है गर्म पानी की वजह से, सरफेस वाटर की वजह से। तो इसलिए जो है बहुत ही तेज़ी से ट्रेंड विंड्स जो है वो ईस्ट टू वेस्ट ब्लो होंगी लानीना के केस में, और जो है वो इंडिया में मानसून बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर लेवल पर चला जाएगा, अबव नॉर्मल मानसून हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021-2022। ये भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर जो है उन्होंने जो है अभी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो अभी सामने रखी है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी ने इस रिपोर्ट को डेवलप किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़ जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, और जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट इंडेक्स। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आपको पता ही है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर इसको बनाया गया था 2002 में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनर्जी इंटेंसिटी जो है वो इंडियन इकोनॉमी की उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट, सो नाउ लेट्स सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is recognized political parties in India. This topic is important for your polity section. So recently, Election Commission has recognized the Aam Aadmi Party as a national party, while it has also revoked the status of certain other parties, including the Trinamool Congress. Their status has been revoked as the national party. So what is this national and state political party status? So under the Election Symbols Reservation and Allotment Order of 1968, Election Commission of India has laid down the technical criteria for a party to be recognized as a national or state party. So what is the criteria for a national party? So a political party would be considered as a national party if it is recognized in 4 or more states, or a state as a state party, or if its candidates have secured at least 6% of total valid votes in any 4 or more states in the last Lok Sabha or Assembly elections, and at least 4 MPs are there in the last Lok Sabha polls, or if it has won at least 2% of the total seats in the Lok Sabha from not less than 3 states. In that case, that party would be recognized as the national party. So Aam Aadmi Party has satisfied the first criteria. It has been recognized in 4 or more states as the state party. That's why it has been categorized as a national party now. What is the criteria for a state party? So a state party is recognized if at least 6% vote share in the last assembly election, or at least 2 MLAs are there in that particular state, then that party is a state party. Or if they have 6% vote share in the last Lok Sabha elections from that very state, and at least one MP from that state, then also they can be categorized as a state party. Or these more conditions are there: 3% of the total number of seats, or 3 state seats, whichever is more, 1 MP for every 25 members, or which is basically the fraction of 1:25 to the state or in the Lok Sabha, and at least 8% of the total valid votes in the last assembly election or Lok Sabha election from that state. In that case also, that party can be categorized as a state party. Then why there is a fight for these parties to be recognized as a national or state party? So for a state party, it is entitled to exclusive allotment of that particular reserved symbol. In that state, no other party or candidate can use that symbol after that. And in the case of national party, this symbol is reserved at the national level, and no candidate or no
other party can use that particular symbol. Okay, so state parties and national parties only need one proposer for filing their nomination. Also, two sets of electoral rolls free of cost are given to these recognized parties, and one copy of electoral roll is given free of cost to their candidates during general elections. So national parties also get the broadcast or telecast facilities over Akashvani and Doordarshan also. A recognized national or state party can also have a maximum of 40 star campaigners, and these the travel expenses of these star campaigners are not counted in the travel in the election expense of the party. Okay, so the next topic is vibrant village program. This topic is important for your governance and security topics both. Recently, Union Home Minister has launched this vibrant village peace program on China border in Arunachal Pradesh at Kibithu village. So this is a centrally sponsored scheme which is being implemented over the next few financial years until 2025-2026. The aim is to develop essential infrastructure and create livelihood opportunities in 19 districts and 46 border blocks of 4 states and 1 UT. So which are these 4 states and 1 UT? Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh and UT of Ladakh. So basically China border. So the aim is to reverse the outmigration from these villages by providing them road connectivity, drinking water, electricity, mobile internet connectivity, health infrastructure, and this all these plans will be created after discussing it with the district administration and with the gram panchayats. Okay, so there will be no overlap with the border area development program, which is already being implemented in these areas. So the next topic is Raman spectroscopy. This topic is important for your science and tech section. So recently, scientists from the Center for Nano and Soft Matter Sciences have designed an efficient surface enhanced Raman spectroscopy substrate. So this is a new low cost substrate. This will increase the sensitivity of this source. So what is Raman spectroscopy? It was discovered in 1928 by C.V. Ramanji, and it aims to study the vibrational, rotational, and low frequency modes of the molecules. So the principle behind this Raman spectroscopy is that the monochromatic radiation, if it is passed through a sample, then that radiation may get reflected, absorbed, or scattered. So different applications can be made using this particular experiment. Okay, so what is a substrate? So this is a surface on which an organism like plant, fungus, or animal lives, or the substance on which an enzyme can act. Okay, so this is a low this CENS have now found a low cost substrate for conducting these experiments on SARS. So the next topic is uranium-241. This topic is important for your science and tech section. So physicists in Japan have recently discovered a previously unknown isotope of uranium, that is the uranium-241. This has an atomic number of 90. You don't need to remember that. Okay, so this has just a half-life of 40 minutes, which is about a full life of 80 minutes. And what is uranium? Uranium was discovered in 1789 by Martin Klaproth, which is a German scientist, and who is a German scientist. So it's a silvery white metallic chemical element in the periodic table, and it has the highest atomic weight. It occurs naturally in low concentrations in soil, rock, and water, and it can be mined from open pits or even underground excavations. So the next topic is UN Democracy Fund. This topic is important for your international relations. So India has emerged as the it has been said that India has been the fourth highest donor to UN Democracy Fund, and this same fund has been funding 68 projects worldwide, which is linked to the Open Society Foundation of George Soros. You may be knowing about George Soros. We do not need to discuss about him. Okay, so UN Democracy Fund was created by the former UN Secretary General Kofi Annan in 2005, and the aim is to empower civil society, promote human rights, and encourage the participation of all groups in democratic processes. So it exists. It is funded on the voluntary contributions from governments, and its advisory board is constituted by the Secretary General, and it consists of UN member states, civil society organizations, and even certain individuals like George Soros in personal capacity. So what is this
Advisory Board. It consists of Secretary General, 8 largest member states contributors, and even 6 other states, so that geographical representation can also be made. And India has been on this board since the beginning because India is one of the largest contributors to this fund. So it considers proposals from NGOs, and based upon that, the funding is given. Okay, after of course the approval from the Secretary General. So India has been contributing since 2005. During the UPA government, $5 million were given to this fund, and later on, when the government changed in during the NDA periods, the contribution was kept declining, and it reached to the level of zero in 2017. But after that, some piecemeal contributions are being made in 2018, 19, 20, 21, and even 22, just to keep India alive and just to keep India active in this UN Democracy Fund and its board. Okay. So the next topic is international prize in statistics. This topic is important for science and tech section. So an Indian American mathematician, C.R. Rao, has been awarded the International Prize in Statistics for the year 2023. This prize is awarded every 2 years by a collaboration among 5 leading international statistics organizations. So this prize is recognized as a major achievement by an individual or team in the statistics field. So who is C.R. Rao ji? So he's a prominent Indian American mathematician and also a statistician, of course. So he has given 3 fundamental contributions. First is of course the Kramer Rao lower bound, second is the Rao Blackwell, and the third is the information geometry. What is what is the application of Kramer Rao? So it is being used in signal processing, spectroscopy, radar systems, etc. Similarly, Rao Blackwell process is being used in stereology, particle filtering, computational econometrics, and informational geometry is being used to understand and optimize the Higgs boson measurements at the Large Hadron Collider. Okay, so the next topic is El Nino. This topic is important for your environment section. So meteorologists are predicting that there are 50% chances that El Nino may occur later in 2023. So what are the normal climatic conditions? Only after understanding the normal climatic conditions, we would be able to understand what is El Nino and La Nina. So in the Pacific Ocean, you know that first of all, you should know that weather depends upon ocean temperatures. So what happens in Pacific Ocean is that near the equator, sun makes the water very warm. So normally, in normal situation, the surface temperature at the coast of northern Australia and Indonesia is very high, which means that there is low pressure system developed over this area, and because the waters near the Peru coast are cold, therefore high pressure system develops in this area. So that's why the winds start blowing from Peru towards Australia, which means east to west trade winds are flown. So this helps our monsoon in normal conditions. But in El Nino, what happens is that the conditions reverse. High pressure system develops in northern Australia and Indonesia, and low pressure system develops over Peru, which means that the trade winds are reversed. They start flowing from west towards east towards the coast of Peru. That's why the monsoon in India suffers. But what happens in La Nina? In La Nina case, the normal climatic conditions are increased. So what happens here is that very low pressure system develops over northern Australia and Indonesia, and very high pressure system develops over the coast of Peru, which means that very high trade winds blow from east to west, and this makes our monsoon system even harder. Okay, it increases the intensity of our monsoon systems. So the next topic is State Energy Efficiency Index Report of 2021 and 2022. This topic is again important for your environment section. Recently, Union Power Minister and New and Renewable Energy Minister has released the report of State Energy Efficiency Index in New Delhi. So this has been developed by Bureau of Energy Efficiency in association with Alliance for an Energy Efficient Economy. So as per this report, Karnataka, Andhra Pradesh, Assam and Chandigarh are the top performing states, whereas if we see at which states have made the highest progress, then Telangana and Andhra Pradesh have shown most improvement in the in this current year's index as compared to the last index. So what is Bureau of Energy Efficiency? We know that it was set up in 2002 under the provisions of Energy Conservation Act of 2001, and the objective of this BEE is to reduce the energy intensity of the Indian economy.
Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.